Hello and welcome to my YouTube channel Cbse Courses with Riti. I'm back with another video on topic life processes biology class 10th. In the previous video, we learned about respiration. What is respiration? Breaking down of food in order to produce ATP, adenosine triphosphate. Clear? Now look here. Breathing. Now please don't mess up with respiration with breathing. These two are exactly opposite different things. You can say that they need each other for the process and so on. You can see an interlink in between, but still they aren't same. How they are not same? What was your respiration? Breaking down of glucose to form ATP. What is breathing? Breathing को हम respiratory system भी कहते हैं. For your kind information, I would like to tell you, it can come in one marker and sometimes we get confused by listening respiratory system. We listen to respiratory system and we say that okay, it must be respiration and फिर हम उसके according we write the answer. But that is wrong. Breathing को ही हम respiratory system कहते हैं. Now why respiratory system? See, I have not very deep knowledge about this topic, but how I made myself satisfied with this respiratory system, or you can say made me learn this, is we humans need oxygen for respiration. Now from where this oxygen will come in our body? Through this lungs हम बोलते हैं. That is basically the process of breathing, जिसमें we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So that inhalation of oxygen help us to carry out the process of respiration, and then the product of respiration, that is a carbon dioxide, help us to exhale it. So breathing can be interlinked with respiratory system. Here I have written respiratory system helps in exchange of gases, and if I write more particularly about the gases, so it is CO2 and O2. CO2, O2, carbon dioxide and oxygen. Now, I'm not going to tell you what is respiration is. If you want to know about it, please go back to the video. Link will be in the comments below. And let's get started with the topic as we have done the recapitulation. Breathing से start करते हैं. Breathing is what? One inhalation plus one exhalation is equals to breathing. Breathing. One time you take inhale oxygen and then exhale carbon dioxide. So this whole cycle, this one cycle is nothing but your breathing. Clear है? Okay. Breathing बता दिया, respiratory one बता दिया. Now, before we start this topic and check out each and every organ, I want to give you few information about lungs. I'm not very sure if it is mentioned in your book, NCERT textbook or not, but here I'm going to tell you. First is pleura. What is pleura? If you know, so kindly pause the video and comment the video. Let's check how much you know about it. Okay, so pleura is nothing but a layer around the lungs. It's just the layer. Lungs के around एक layer होती है, that is known as pleura. It acts as a cushion. Pleura acts as a cushion for lungs. I'm not writing for lungs, please do write it down, I have no space here. Okay, so pleura acts as a cushion for lungs. One more thing that this pleura is doing, ये तो first चीज हो गई इसका first function. Second function of pleura is secretes a fluid. Now, secretes a fluid क्या? That, just a second, acts as a lubricant. Now, pleura एक layer है around your lungs. It has two functions. First is it acts as a cushion for your lungs. ठीक है, means act gives protectiveness, support to the lungs. You can simply write in your exams, although I don't think it will come, but if it comes, so you have luck that you are watching my video and you know about it.
So it acts as a cushion. Secondly, secretes a fluid. It fluid secrete करता है, that acts as a lubricant. What is lubricant? If you don't know, you can check out on the Google as well, but I'll tell you here just a brief. It reduces friction. अब friction क्या होता है? You will ask. So just say कि ये दो चीजें are not going smoothly. So we add oil तो smooth हो जाता है. So that fluid here acts as a lubricant. Soft कर देता है कपड़ा. This is smooth movement हो. So that's what pleura does for the lungs. Lungs, you know, expands then contracts. ऐसे ऐसे फूलता रहता है. जब हम inhale करते हैं expand. जब हम exhale करते हैं तो it shrinks kind of. So उस समय for a smooth movement we need a lubricant that is provided by the pleura. So that is the second function of pleura. Now one more thing I want to talk about it. Please take a note of here. Please take note or take a screenshot or pause the video, whatever you want to do, please do it. Okay, so I hope you have done. Let me just check it. Okay, diaphragm. You know about it. I know that you know, but still. If we are talking about a topic, so why don't we just take the topic as a whole, even if you know it, right? If you know it, so you can just move the video forward for at least 20 seconds. Diaphragm क्या होता है? It's nothing but a seat of muscle. Seat of muscle. Where it is? Lungs के नीचे होती है. मैं यहाँ लोकेशन लिख दे रही हूँ, although you don't need to write it down. ये वाला point मत लिखना, because when you go to the location, so it actually comes a topic that is very in deep. So please ये point मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है. Don't write it. It is basically हम जब drawing भी करते हैं, so you draw it below the lungs वैसे तो, but still please don't write it down. Lungs के just नीचे there is a diaphragm. Now it helps in what? It actually differentiates between the chest cavity and lungs. Means it helps the lung to expand. Are you getting my point? Basically, it helps in what? Expansion of chest cavity during inhalation. Now, first of all, please write it down. Diaphragm के बारे में you actually don't need to learn in very detail because it is not given in your textbooks. So obviously it will not come in your exam because exam में पूरा NCERT आएगा, right? But what if के chances की वजह से you just write, remember a function of diaphragm. That is expansion, helps in, you can just write helps in expansion of chest cavity during inhalation. Inhalation means when we take in oxygen. Okay? That is what I wanted to discuss, and I think I'm all done for lungs. Now, let's start the talking about this all lungs. Lungs main organ होता है. Remember, lung is the main organ for breathing. Fine? Okay, let's move forward. When you breathe, when you inhale, do you know the process, the passage through which it goes to lungs? Lungs में जाना है. Lungs में भी we have to go to alveolar sacs. तो मैं inhale कहाँ से करती हूँ? From a nose. तो उसके बीच में क्या क्या process होता है? What are the ways? Like in digestion we learned that it goes through food pipe in the stomach, then in duodenum, small intestine, large intestine, rectum, finally anus, and it eliminates. But here it's bit different. We inhale and we exhale from the same process. अभी इसकी बात नहीं करते, पहले से आ जाते हैं. Okay. From where you inhale? पहले inhale से start करते हैं. We inhale from our nose. You can see that as nasal cavity. Nasal cavity or nose. Okay. Nasal cavity में क्या होता है? Mucus. Just keep on writing these things. Second, fine hairs. These two things are there in your nose. You know that, right? Okay.
में. Okay, they have a important, the thing that we see as a dirt and waste, actually it is kind of useful to us. It has a function in breathing. What is its function? Please think and tell me. Okay, so what can it do rather than filtration? So basically it acts as a filter. It filters the atmosphere. When we inhale, we are not only taking oxygen, right? Oxygen, hydrogen, and so many gases, the dust particles, the pollutants, everything is going inside. So this actually acts as a barrier. They stop the waste, the items we don't need inside there and then only, and filters the air inside the body. समझ आया? Mucus and fine hairs जो कि nasal cavity में होता है, that actually filters the air. Nasal cavity समझ आ गया? Now trachea. Trachea has a very common name. What is the other name for trachea? If you know the answer, comment me below and I'm going to check it and let's see who is having the right answer. Okay, comment. I hope you have done. The other name for trachea is the windpipe. Okay? Now what is trachea doing? As the name suggests, windpipe, it actually passes the air from the nasal cavity to our lungs. Do I need to write it down? You can just write it down, right? Let me just tell you. Just write it down and please make a note of this topic. Trachea, also known as windpipe, help us to pass air from the nasal cavity to our lungs. Okay, and I am very sorry we are not having the diagram here. I request you to just check it out on your textbooks. Very beautifully there it is given. Okay, windpipe का हो गया. Now what is the work of? I wrote the wrong spelling. Okay. I want to apologize. So, ring of cartilage. I say rings of cartilage. What is this now? Rings of cartilage. Cartilage, you know, cartilage is a soft tissue. Now, rings of cartilage means ring, pata hai, circular thing. Cartilage means circular tissues. So, what's there? So, now these two things are actually interrelated. Trachea, you know, passes the air from nasal cavity to lungs. Now, this ring of cartilage ensure that air doesn't collapse. अब उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. That how it happens, what it does and stuff. Just remember, ये इतना ही आएगा एग्जाम में भी. That what is the work of ring of cartilage? So ring of cartilage ensure that air doesn't collapse. तो होता क्या है? This is your trachea, let's say. That is a windpipe. Now it is surrounded with rings of cartilage. So this ring of cartilage actually help us to pass the air smoothly. Like sometimes, अगर ये ring of cartilage नहीं होंगे, so there will be more chances to air choke. Choke होता है ना, air choke, that we start coughing all of a sudden. So that is air choke. लेकिन ये तो कभी-कभी होता है. But this ring of cartilage actually help us that air choke जो होता है, जो air collapse होता है, that doesn't happen. That is what ring of cartilage do. Please write down this ring of cartilage. Pointers बना लो. First nose, nasal cavity, second trachea, third ring of cartilage. And when you write all the pointers, it will actually give you the process of breathing. And एक pointer से you will know that what's the function of this, what's the function of this and so. Let me just rub it. Okay, let's get rid of this. Now, bronchi. Ring of, यहाँ पे जैसे trachea था ना, जो कि was connected with your cartilage, तो ये ऐसे में दो में divide होता है. ये जो दो stem divide हो रहा है. You know we have two lungs. You know that, right? So ये जो two lungs हैं, both needs air, oxygen. तो यहाँ से तो air single way में आया. यहाँ जाके ये दो way में divide हो जाता है. It's actually something like this. Pardon my diagram. Please try to check it out on your textbooks. So these two things is what?
ब्रोंकाइस, ठीक है। ये आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है, then the air passes through ring of cartilage into bronchi, that is further divided into bronchi holes, further divided into alveoli and hence alveolus sac. Don't worry, I'll just tell you. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम. You will write that this trachea passes the air into bronchi holes, that is 2 tubes. आप एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखोगे, that is further divided into bronchi holes. Bronchi holes. यहाँ तक समझ आया? मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज चेक योर नोट्स एंड आई एम बेगिंग यू टू मेक नोट्स इफ यू वांट टू एज दिस टॉपिक. ओके. The air enters through the nasal cavity where mucus and fine hair particle filters the air. Then it goes into trachea, that is also known as windpipe. It is surrounded with ring of cartilage that ensures air doesn't collapse. From trachea, air passes through bronchi, that is 2 tubes, which is further divided into bronchioles and alveoli. Alveoli, I don't know the correct very pronunciation, but for me it's alveoli or alveoli, जब जो निकल गया, but the spelling is the thing you need to take care of. So ये समझ आया, ये समझ आया. मैंने इसको ब्लैक मार्कर से क्यों किया, क्योंकि ये आपके छोटे से एज लाइन में आ रहा है, इसका कुछ खास फंक्शन हमें दे नहीं रखा है और है भी नहीं. इट एक्चुअली जस्ट एक्ट्स एज अ passing channels, you can say. I don't know it's correct way of saying it or not. Anyways, alveoli, it's where exchange of gases occurs. Now the main thing जिसके लिए हमने इतना प्रोसेस किया, यहाँ से जो कहानी शुरू हुई उसका मेन काम कहाँ होता है, alveoli में. Alveoli is the thing where your exchange of gases occurs. और ये occur कैसे होता है exchange of gas? Due to diffusion. Diffusion helps in alveoli. Let's say एक alveoli है, यहाँ पे O2 ज़्यादा है, यहाँ CO2 ज़्यादा है, ठीक है. एटमॉस्फेयर में O2 ज़्यादा है, alveoli में CO2 ज़्यादा है. तो अब क्या होगा, ये CO2 जो है ये बाहर जाएगा, ये O2 जो है अंदर आएगा. तो नाउ अंदर अब O2 है और बाहर अब CO2 है, ठीक है. मैं फिर से बताती हूँ, अंदर CO2 है, बाहर O2 है. अंदर O2 का लेवल कम है, बाहर CO2 का लेवल कम है, तो डिफ्यूजन हो जाएगा और डिफ्यूजन की वजह से अब अंदर O2 आ गया, बाहर CO2 आ गया, ठीक है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. बेसिकली डिफ्यूजन होता है. ऑल्दो दे विल नॉट आस्क यू टू एक्चुअली डिफाइन कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा है एक्सचेंज का, बट स्टिल इफ दे डू यू मस्ट नो, बिकॉज आवर टारगेट इज टू हैव गुड मार्क्स इन आवर एग्जाम्स. ओके फाइन, इसको रब कर देती हूँ बिकॉज दिस डायग्राम इज नॉट गुड, सो वी नीड टू गेट रीड ऑफ इट. ओके, तो alveoli में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गए. तो alveolar sacs क्या हुआ? Are you getting this question or not? I am getting. I really do. तो alveoli ही जो होता है that is further divided into alveolar sacs. Just a second. I'm very sorry, I did a mistake here. उल्टा हो गया. Let me correct it. I don't know why it's feeling like that. Alveolar sacs में exchange of gases होता है due to diffusion और alveolar sacs is further divided into alveoli. अब ये होता क्या है? Alveolar sacs मुझे ड्रॉ करती हूँ मैं. This is what? This is your alveolar sacs. This is your alveolar sacs. ठीक है? Now, your alveolar sacs helps in exchange of gases. How exchange of gases happens? It happens due to diffusion. Diffusion कैसे होता है? Concentration की वजह से. Like alveolar में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है. अभी मैं inhalation की बात करूँ तो, और ऑक्सीजन alveolar के बाहर बात होता है. तो ज़्यादा कम होने की वजह से वो डिफ्यूजन करते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से हमने लिया वो बॉडी में चला जाता है और बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आ जाता है alveolar sac से. इतना क्लियर है? नाउ alveoli क्या होता है?
Can you see these small circles? So one of them is known as alveoli. एक individual का नाम है alveoli. Now this alveoli looks like this. एक छोटी सा. और ये alveoli जो होता है, it is covered with this. Sorry for my drawing. I think इतना गंदा नहीं होगा, but still. ये green क्या represent कर रहा है? Blood vessels. So your alveoli is highly supplied with blood vessels. ठीक है, तो समझ आ रहा है कि आपने डिफ्यूजन से एल्वियोलर सैक्स के यहाँ पे इनहेलेशन किया, मैंने नेजल कैविटी से ट्रैक किया, फिर ब्रोंकायोल्स, एल्वियोलर सैक्स में डिफ्यूजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया, और ऑक्सीजन जो अंदर है ये एक एक एल्वियोलाई बहुत सारे ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती है. मैं एक एक की बात कर रही हूँ, जॉइंट की नहीं, एक एक सिंगल एल्वियोलाई. एंड दिस इज डायरेक्ट ऑक्सीजन हमारा ब्लड वेसल्स में चला जाता है. नाउ यहाँ का प्रोसेस वी डोंट नीड टू रियली थिंक अबाउट, इतना ही लिखोगे यू विल गेट मार्क्स. नाउ इफ यू वांट टू स्टडी मोर आई विल जस्ट रिकमेंड यू लक्ष्मी, ऑल्दो वो उसने भी अकॉर्डिंग टू 10th ही दिया है, बट स्टिल अ लिटिल बिट डीपर यू कैन से. तो ब्लड वेसल्स है, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में चला गया. और ब्लड वेसल्स में क्या होता है, विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट एक बार यहाँ समझ लेते हैं. डिफ्यूजन हुआ, ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया. ऑक्सीजन जो अंदर आया एल्वियोलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है एक एक एल्वियोलाई से इस तरह से, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन था वो ब्लड वेसल्स में चला गया. अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एल्वियोलाई से बाहर जो निकाला है CO2, वो अब वापस बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन पासेस थ्रू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है, दैट इज बेसिकली एल्वियोलर सैक. अब वहां से फिर रिवर्स मोड में निकल जाएगा नेजल कैविटी से बाहर. एंड दिस वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग. समझ आया इतना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप इट इज क्लियर. प्लीज मेक द diagram, please make the notes of this whatever I have taught you, and let's talk about what happens in blood vessels. Okay, so now थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, राइट? तो थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करती है. ओके आई नो कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, बट स्टिल मे बी बेटर. ओके, alveolar sac से the oxygen went into your blood vessels and this carbon dioxide from blood vessels goes into your alveolar sacs. Means this oxygen and carbon dioxide both travels in your blood vessels. Now we are just going to have a bit detail how it happens. Carbon dioxide is really very soluble, but oxygen is insoluble. Are you getting my point? So carbon dioxide actually gets soluble in blood. It gets soluble in blood, जिसकी वजह से hence it is then transported in all parts of body. Soluble like water में आप salt डालते हो तो कितने अच्छे से soluble हो जाता है. I'm not comparatively saying कि salt जितना ही soluble होता है, I don't have any idea कितना soluble होता है, but still blood में soluble होता है. That is how carbon dioxide actually पूरी बॉडी से कनेक्ट होके निकलता है. Now कैसे होता है I don't actually need to say, but okay let me tell you. While respiration the product was carbon dioxide, yes or no? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, और हर एक सेल से ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है. अब हर सेल मेरे पैर की भी, हाथ की भी, हर जगह की कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. सो हाउ एम आई सपोज टू टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन माई लंग्स? So this actually happens with the help of blood vessels. This carbon dioxide gets soluble in the blood and hence पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके हम लंग्स तक पहुंचा पाते हैं. यहाँ पे then in alveolar sacs it actually gets diffused and exhaled out. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को समझ आया. Now oxygen. Oxygen is insoluble, बिल्कुल soluble नहीं है, but oxygen needs to be transported in all our body. Why? Respiration होगा. If you want to form ATP without oxygen, how it's going to happen? It's not going to happen. Do you want to kill your cells? No, right? So you need to
transport oxygen in all parts of body. Even your brain needs huge amount of oxygen. If oxygen doesn't reach your brain properly, you can get dizzy and unconscious. तो कैसे होता है? Insoluble है, blood में हो नहीं रहा है soluble. What am I supposed to do? The answer is a savior, hemoglobin. That is also known as respiratory pigment. Why it is known as respiratory pigment? Because it transports oxygen in all parts of body. That actually helps in respiration, or also if your respiratory system का भी part हो गया, right? And this hemoglobin is where? In your RBCs. This hemoglobin is the responsible for the red color of your RBCs, right? Okay. So what happens is oxygen gets a bond हो जाता है. Like let's say this is your hemoglobin. This is your oxygen in free state. It goes in your blood vessels and it gets attached to your hemoglobin really tight. After hemoglobin through the RBCs, through your blood vessels, transfers the oxygen in all over your body. So hemoglobin is the one that makes the transportation of oxygen possible. That's why it is known as respiratory pigment, and you can see that hemoglobin is really important for us. Now एक question आता है इसमें से that what is your hemoglobin is really low. Now think and answer me, okay? This is a question very obvious to answer. अगर समझ आ गया hemoglobin क्या है, मैं बता देती हूँ hemoglobin क्या है एक और बार. Hemoglobin actually helps to transport oxygen in our body. क्योंकि carbon dioxide is soluble, it gets mixed with blood and पूरी body से collect होके lungs तक पहुंच जाता है. But lungs क्या है, need to transport oxygen in all the parts of body. And oxygen is insoluble in blood. Insoluble होता है oxygen. Hence, it actually gets attached to your hemoglobin really tightly, and this hemoglobin that is there in your RBCs help us to transport the oxygen in your blood vessels. That is why it is also known as respiratory pigment. अब क्वेश्चन है कि अगर आपकी बॉडी में hemoglobin कम है तो if you have your reports, test reports, तो blood report में भी होता है, they actually tell you कि okay, this is your hemoglobin level. And उसमें होता है कि कभी आपका hemoglobin बहुत low आता है, कभी hemoglobin perfect आता है. When it's perfect, you are okay. But when your hemoglobin is low, your parents must have said that my hemoglobin come and you need to eat hard, you need to eat, you need to increase the hemoglobin in your body. It's really important. Doctor says the same. तो क्यों क्या होगा अगर hemoglobin कम हो जाएगा, या hemoglobin को हमारे को एक proper level पे रखने की क्या जरूरत है? If you know the answer, tell me in the comments below. Okay? पता चला क्या होगा? If you are getting, अगर थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, आंसर आ रहा है तो प्लीज कमेंट मी द आंसर. हेमोग्लोबिन का फंक्शन देखो, ऑक्सीजन इसको पहुंचाना है. हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है? एटीपी जनरेट करने के लिए. एटीपी क्यों होता है? एनर्जी के लिए. चेन देखा? Let me repeat. जब हेमोग्लोबिन कम होगा, then ऑक्सीजन आएगा बट इनसॉल्युबल रहेगा. अगर आप बहुत अच्छे से इनहेल कर रहे हो, बट ऑक्सीजन आ तो रहा है, बट इट्स नॉट रियली एबल टू ट्रांसपोर्ट इन योर बॉडी बिकॉज हेमोग्लोबिन का लेवल कम है. हेमोग्लोबिन बहुत कम है आपका, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हार्ड हो जाएगा. प्लीज राइट द आंसर इफ यू वांट टू. If your hemoglobin level is low, then oxygen will not be able to get transported in your body as much as it needs, because hemoglobin acts as a respiratory pigment. Therefore, due to the lack of oxygen, let me repeat myself, due to the lack of oxygen in the body, you will feel weak, low energy. Let's say मेरा hemoglobin was low few days ago, and मैं breathe तो अच्छे से कर पा रही थी. I'm really good. I was really inhaling very nicely, but hemoglobin था नहीं, respiratory pigment नहीं था, तो oxygen transport नहीं हो पा रहा था body में अच्छे से. Now when your oxygen was not able to transport, like in my case, oxygen जब ठीक से transport नहीं हो पा रहा था, so oxygen body को चाहिए. If it's not able to transport, so due to the lack of oxygen,
आपको ये रेस्पिरेशन और पूरा केस नहीं लिखने की जरूरत. यू कैन सिंपली राइट और सिंपली थिंक कि ऑक्सीजन की कमी हुई जिसकी वजह से आई एम एक्चुअली फीलिंग वीक बिकॉज एनर्जी नहीं हो रही है. वीक लगेगा मेरी बॉडी में, जितनी मुझे ऑक्सीजन की नीड है उतनी नहीं हो रही है. सेकेंडली आई फील लो एनर्जी. ठीक है, ये तो हो गया आंसर. एक और आंसर है, वाई डू यू faint if you inhale carbon monoxide. ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है. Why do you faint when you inhale carbon monoxide? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आता है, पहले इसकी बात करते हैं. Let's say you burnt something while closing all your doors, everything, just packed your room up, और फिर आपने कुछ जलाना स्टार्ट किया. तो उस केस में there is a formation of carbon monoxide. और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये हेमोग्लोबिन का ज्यादा क्लोज फ्रेंड है. टू बी फ्रैंक, ऑक्सीजन इज द फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, बट कार्बन डाइऑक्साइड कैन से दैट इट्स द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हेमोग्लोबिन. तो जब हेमोग्लोबिन है अंदर ब्लड वेसल्स में, इसके हेमोग्लोबिन के पास थोड़ा सा ऑक्सीजन आया और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म अ क्लोज बॉन्ड विद योर कार्बन मोनोऑक्साइड. और बहुत सारा धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होते जाएगा बिकॉज आपने तो रूम बंद कर दिया पूरा. If you have locked your room up and then you are burning something, तो ऑक्सीजन बाहर से एटमॉस्फेयर ही नहीं आएगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा. और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है ये इंक्रीज होता जाएगा और ये हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के एक्चुअली आवर बॉडी विल स्टार्ट टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, नॉट ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन, एंड व्हेन योर ऑक्सीजन विल नॉट रीच योर ब्रेन, यू विल एक्चुअली बी अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस हो जाओगे अगर आपका ऑक्सीजन आपके ब्रेन में थोड़े से भी टाइम के लिए नहीं गया. फर्स्ट यू विल स्टार्ट फीलिंग डीजी और फिर आप फेंट हो जाओगे, अनकॉन्शियस हो जाओगे. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि जब कुछ जला रहे तो पूरा खुले एटमॉस्फेयर में जलाओ, रूम के गेट से सब खोल के, बिकॉज अगर बंद रूम में बहुत ज्यादा आपने आग कुछ लगाया है. सो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीजेस, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड forms a very close bond with your hemoglobin, thus your oxygen is not able to get transported in your body, especially in your brain. Therefore, due to the lack of oxygen in your brain, you will feel dizzy and you will faint or you will get unconscious. So this is how it happens. Okay, I think मैंने सब कुछ कवर कर दिया है. We talked about breathing. It starts from nasal cavity, then trachea, air passes. फिर ring of cartilage ensures that air doesn't collapse. उसके बाद air transfers from trachea to bronchi, further divided into bronchioles and alveolar sacs, where the transport or exchange of gases occur. Alveolar sacs भी जो होते हैं that's made of alveoli, and alveoli is highly supplied with blood vessels. Now this exchange of gases occurs due to diffusion. Now blood vessels में carbon dioxide is collected from all our body and given to the lungs, and we exhale carbon dioxide and inhale oxygen that is then transported through blood vessels to all our parts of the body. And oxygen is really important. Carbon dioxide being soluble is really transported easily in our body, but oxygen is insoluble, therefore it needs hemoglobin, that is also known as a respiratory pigment, which transports oxygen in all parts of the body. If your hemoglobin level is low, तो ऑक्सीजन की लैक की वजह से यू विल फील वीक एंड लो एनर्जी, एंड इन एक्सट्रीम केसेस वेयर देयर इज अ रूम फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इफ यू इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड मच देन यू विल फेंट बिकॉज hemoglobin के साथ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्पेशली योर ब्रेन. नाउ इसमें से एक बात मुझे और बतानी थी, लेट मी जस्ट रब इट. ये बात हो गई खत्म. Okay. Alveoli is balloon-like structure and highly or it has rich supply of blood capillaries. Capillaries लिखना, vessels नहीं. Capillaries are actually vessels से होती हैं, blood vessels से होती हैं capillaries. They are just very thin blood vessels जिसको हम capillaries बोलते हैं.
तो ये एक पॉइंट था, मेरे को लगा मैंने नहीं बताया तो बता देना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में. So alveoli is the balloon-like structure. It has rich supply of blood capillaries and exchange of gases occurs. Now you will ask me a question कि काम तो alveolar sacs का था, alveoli क्या है? तो alveolar sacs क्या थे? पहले ये बताओ मुझे. This is the kind of drawing I drew that time also. ये पूरा alveolar sacs है और इसका एक जो है वो alveoli है और ये सारे के सारे alveoli are highly connected with this thing called capillaries. अच्छे से connected है, ठीक है. Please don't mind my drawing. I know it's worst, but still I'll try to improve. Don't worry. तो एक alveoli blood capillary से connected होता है and exchange of gases होता है diffusion से. तो आप देख सकते हो ये alveoli से ही बनके alveolar sacs बनते हैं. तो बेसिकली समझ लो ग्रेप्स बंच में आते हैं. अब आप इसको बंच ऑफ ग्रेप्स बोलो, एक पीस को निकाल के ग्रेप्स बोलो, लेकिन सब होते क्या है? एक फ्रूट. इन द सेम केस इसको आप alveolar sacs एक ये पूरा जो होता है, ये एक पूरा ऐसे बंच, उसका नाम alveolar sacs होता है और उसका एक इंडिविजुअल का नाम alveoli होता है. बट जब भी आपको पूछेंगे where exchange of gases occurs, you can write alveoli itself. alveoli में ही होता है exchange of gases. alveoli में होता है, यही भूल जाओ. alveoli बस समझ लो, ऐसे लिख लेना that bronchi is further divided into bronchi holes, into alveolar sacs, and then finally into alveoli, which is a balloon-like a structure. So with this, we are clear with it. Now, question 2 दे रही हूँ, homework question. First question, let me think of क्या दूँ. I have decided. I thought that कुछ दूँगी. Function and structure of alveoli. Second, which lung is slightly bigger? Third, explain difference between breathing and respiration. तो ये 3 क्वेश्चन है. You have to do it. So please make sure that you do, and I'll check your answers in your comments below. So please, इसका मैं बता देती हूँ. Breathing is just the exchange of gases, but respiration, मैं इसका आंसर बता दूँगी. Breathing is the exchange of gases, but respiration is the breakdown of food to generate ATP. Breathing में ATP use होता है, respiration में ATP produce होता है. Used, produced. ब्रीदिंग में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन लंग्स होता है, मेन काम लंग्स में होता है. रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया और द सेल लेवल पे होता है काम. तो these 3 points are enough to justify. And with this, कौन सा लंग स्लाइटली बिगर है, you can just think of it, एक guess करके give me answer. And function and structure of alveoli we just discussed. So I hope you like my video. This video was information full for you. You learned something, everything was clear which you weren't able to understand. Now you can actually be confident about this topic after watching this video. अगर कुछ नहीं भी समझ आया, so please give it a try. So just rewind the video and listen to it again. I hope you like my video. If you don't like my video, so do like, subscribe and share my channel. Also don't forget to ring the bell hand button so you will get all the notifications of my channel. And please subscribe. Please. And also like and comment me below that if it was useful for you or not. Till then, bye. Subscribe.